है ना, प्रेजेंटेशन होगी और चीजें होंगी, तो so we can save time. Can someone tell me what is heart failure? जो जवाब देगा उसके लिए स्पेशल प्राइज है. So heart failure is when the heart fails to function as a pump. Okay, that is not exactly accurate, लेकिन that's part of the answer. देखें, the heart basically is a pump which is supplying blood to your body, okay? And the demands of the body depend upon the status of the body, okay? Sometimes the metabolic rate is low, sometimes it is high, sometimes it's just basal metabolic rate, okay? So whenever the heart is unable to supply sufficient blood to meet the metabolic demands of the body is when we say that the heart has failed. ठीक है? आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि in a normal person with a normal heart, can there be heart failure? Can the heart Yes, fail? sir. नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल हार्ट है उसका, उसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, परफेक्टली नॉर्मल आदमी है. कैन ही एक्सपीरियंस, ही और शी एक्सपीरियंस हार्ट फेलियर? Yes, sir. It is possible. कैसे बताएं? ठीक है, जवाब सही है, इट इज पॉसिबल, बट हाउ? सर बाय डेफिनेशन जिस तरह आपने बताया कि जी. ब्लड पंपिंग कैपेसिटी मेटाबॉलिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो इफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर सो इंक्रीज्ड दैट द ब्लड heart cannot provide adequate supply, so that could cause heart failure. Okay, so just give me one example of how that would be possible in someone who's completely normal. सर अगर मसल्स स्टिफ हो जाएं? नहीं बेटा, नॉर्मल है सारा कुछ. देखें, आप पहले जो थे, जो उन्होंने सही बताया था, when the heart is unable to meet the metabolic demands of the body is when you say there is heart failure. In normal person heart failure exactly तो नहीं होता, it's called cardiopulmonary failure. आप जैसे बहुत तेजी से भागें, सीढ़ियां चढ़ें, फर्ज करें, आप एक वक्त आता है, let's second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, whatever, when you're unable to go on, होता है ना इस तरह नॉर्मल लोगों में भी, when you're unable to go on, you just have to sit down and rest, you're so out of breath, that is cardiopulmonary failure, okay? And it can happen transiently even in perfectly normal individuals. ये एग्जाम्पल देने का रीजन ये है कि आप समझ सकें हार्ट फेलियर होता क्या, ठीक है? हार्ट फेलियर बेसिकली is that the heart is unable to supply enough blood to keep up with the metabolic demands of the body. Everybody understand this so far? यस सर. Yes, sir. देखिए, आपको उन्होंने बताया ना कि राइट और लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है, राइट हो लेफ्ट हो, Yes, sir. इवेंचुअली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है, ठीक है? दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे. नाउ हार्ट फेलियर जो है बेसिकली क्लिनिकली स्पीकिंग दो टाइप के होते हैं. राइट और लेफ्ट तो आपको बताया, वो आपको समझ भी आ गया. सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी होता है. You can have a perfectly normal systolic function and yet you can have heart failure. इसमें भी जो आपने कहा था ना, मसल स्टिफ हो जाएं, that is diastolic heart failure, when the heart is unable to relax properly to take in enough blood, and because it doesn't take in enough blood, it doesn't pump out enough blood as well. So this is diastolic heart failure. ठीक है? अब usual जो heart failure that we deal with clinically, most of it, the majority of it is systolic heart failure. So it is important to quantify it. ठीक है? आप quantify कैसे करती हैं?
हर डिजीज में नहीं होता जैसे आप कहते हैं ये माइल्ड है या मॉडरेट है या सिवियर है या वेरी सिवियर है, इस तरह आप हार्ट फेलियर को भी क्वांटिफाई करते हैं। और इसके अलावा और भी क्वांटिफिकेशंस हैं, लेकिन दिस इज सिंपलेस्ट। ओके, विद मी सो फार ऑल ऑफ यू? Yes, sir. We'll come to quantification in a while. Diastolic heart failure जो है, it is basically impaired relaxation of the muscles of the heart, the myocardium. ये किन किन वजूहात से होता है? Restrictive heart disease, ठीक है, मायोकार्डियम नॉर्मल है तो पेरिकार्डियम। आप लोगों को म्याऊ म्याऊ की आवाज आ रही है? नहीं आ रही? चलें ठीक है, आ रही है सर। आ रही, अच्छा चलें। तो हार्ट मसल बेशक ना रिलैक्स कर रहा हो, there could be other problems, you know, associated with the structures around the heart that can also cause impairment of relaxation. The other quite big cause is constriction of the pericardium. It's called constrictive pericarditis. It is relatively more common in Southeast Asia than in other parts of the world. Can anybody tell me the cause of a higher percentage of constrictive pericarditis in Southeast Asia? जल्दी से बता दें। आपको हिंट दिया साउथ ईस्ट एशिया। आपको एक और हिंट देता हूँ, इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से होता है। चलो बच्चों, यूज योर किडनी, कम ऑन। Tuberculous pericarditis, okay? Constrictive pericarditis due to tuberculosis. Also, diastolic heart failure can happen because of extraneous pressure due to eclasia of esophagus, due to tumors close to the heart, etc., etc. ठीक है बच्चों, you clear? Yes, sir. कोई सवाल पूछना है तो आप बताएं। सर बिला आप ये ट्यूबरकुलस कोई डांट नहीं पड़ेगी जी। ट्यूबरकुलस वाला जी। पार्ट फिर से रिपीट कर देंगे? किस चीज का? ये जो आप बता रहे थे साउथ ईस्ट एशिया में जो कॉमन है, ये वाली चीज। एक्सट्रेनियस प्रेशर का। जी। देखें, हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, पेरिकार्डियम भी नॉर्मल है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन कोई और स्ट्रक्चर है। हार्ट इज सराउंडेड बाय द हाइलम, द लंग्स, द प्लूरा, ठीक है। कोई भी कोई ट्यूमर हो which is pressing on the heart, fluid which is not inside the pericardium which is pressing on the heart, anything which is causing decreased relaxation of the heart would also cause diastolic failure. अच्छा, ये जो causes मैंने आपको बताए हैं, इसमें आप पेरिकार्डियल फ्यूजन भी डालें। पेरिकार्डियल फ्यूजन इज मोर कॉमन देन रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ठीक है बच्चों, और कुछ पूछना है? एवरीथिंग क्लियर सो फार? सिस्टोलिक हार्ट फेलियर को क्वांटिफाई कैसे करते हैं? देखें, the way that we quantify heart function is to check what the आप लोगों को फिजियोलॉजी में बताया गया है कि कार्डिक आउटपुट कैसे मेजर करते हैं? एनीवन? बच्चों जल्दी से बताओ ना, इस तरह फिर वक्त जाया होता है। देखिए, there is thermodilution method. You put in a catheter, a Swan-Ganz, into the right atrium, and you inject a certain volume of fluid at a certain temperature. That fluid courses through the whole body and then comes back
the thermodilution, you put it into, and the temperature of the fluid increases because your body is at a higher temperature than the fluid. And that rate of increase of temperature, you put that into a formula and that gives you the cardiac output. Do you think this is an easy method to check for cardiac output in every patient that you get? क्या कहती हैं आप? No. Very good. आप हर एक को स्वान गैंस नहीं डालेंगे ना? So what we have come up with is, we have come up with echocardiography, which is basically ultrasound. We see the fractional shortening. This means the difference between the diastolic dimension of the left ventricle and the systolic dimension of the left ventricle. And we see the fractional change between diastole and systole, and we extrapolate that to the cardiac output. समझ आ रही है बच्चों अभी तक? Yes, sir. देखें, आप कार्डियक आउटपुट निकाल नहीं रहे, लेकिन आपने कोरिलेट किया कार्डियक आउटपुट को with the fractional shortening that you see on the ultrasound. Okay? And it is a relatively accurate method of seeing what the cardiac output is. Fractional shortening जो होती है उससे आप निकालते हैं, जो हर एक को ऑलमोस्ट पता होता है, ejection fraction. ठीक है? Ejection fraction means the ratio of the volume of blood going out of the heart compared to the one coming in. ठीक है? Can anybody tell me what is the normal ejection fraction in a human being on echo? कोई भी आप नंबर ले लें. 60%. Okay, 60%, खैर more than 55% is normal. ठीक है? So now let's come to quantification of heart failure. An ejection fraction of 40 to 50%, we say it is mild heart failure. ठीक है? 30 to 40% is moderate heart failure. 20 to 30% is severe heart failure. Less than 20% would say it's a very severe heart failure. ठीक है? The symptoms mostly correlate with the severity of heart failure, but not always, as we'll see. Everything clear so far? या कुछ पूछना है before we move on? Yes, sir. It's clear. Okay. Shaji, now once you have diagnosed that someone has heart failure, or once not diagnosed, but once you think that someone has heart failure, then you go on to symptoms and signs. ठीक है? यहाँ पे हम डिफरेंशिएट थोड़ा करते हैं कि राइट एंड लेफ्ट हार्ट फेलियर, उस तरह से भी जा सकते हैं. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के सिम्टम्स जो हैं और साइंस जो हैं, दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट हार्ट फेलियर. तो अगर सिर्फ राइट हार्ट फेलियर है तो कंजेस्शन होती है. देखें, राइट साइड ऑफ द हार्ट, इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम all of the body except the lungs. ठीक है? Left side of the heart receives blood from the lungs and not from the rest of the body. There are two circulations, pulmonary and systemic. So when there is right heart failure, there is systemic blood congestion. ठीक है? And the congestion takes place in the venous system more so than the arterial system. Is that clear? Yes, sir. Because of this venous congestion, the hydrostatic pressure of the blood rises. Okay? And you know that the forces that keep the fluid inside the intravascular compartment are the oncotic pressure and the reverse hydrostatic pressure. ठीक है? पता है ना इस चीज? So when the hydrostatic pressure inside the vascular compartment increases and it
reaches and goes beyond a certain threshold, meaning that the value of the hydrostatic pressure increases and goes beyond the oncotic pressure inside the intravascular compartment, that is when fluid starts leaking out of the vascular compartment. ठीक है, समझ आ रही है ना? Yes, sir. And edema persons. So that causes edema of the tissues. ठीक? शुरू में this edema is only where gravity acts the most. ठीक है? The patient is mobile, तो आपको pedal edema मिलेगा. If the patient is not mobile, patient is just lying, then you'll get sacral edema. ठीक है? But before getting edema, because there is congestion in the veins, you would get what? जल्दी से बताएं. Vein congestion है तो कौन सा sign मिलेगा आपको? Dyspnea. Cyanosis? No. Raised JVP. Cyanosis? Raised JVP. ठीक है? Jugular venous pressure. अब बच्चों जल्दी से एक कोई बता दे for bonus points. कौन सी वेन, कौन सी jugular vein होती है जिसमें JVP देखते हैं? Right side. चलें राइट या लेफ्ट, लेकिन कौन सी होती है, इंटरनल के एक्सटर्नल, किसमें देखते हैं? External carotid artery. Internal अब वेन अभी कह रहा हूँ, कैरोटिड आर्टरी में थोड़ी देखते हैं. External jugular vein? Common jugular vein. नहीं, इंटरनल जगुलर वेन में देखते हैं क्योंकि उसमें वेल्व्स नहीं होते. ठीक है? तो जो प्रेशर होता है इंटरनल जगुलर वेन में, दैट इज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेशर इनसाइड द राइट एट्रियम. ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर जेवीपी इंटरनल जगुलर वेन में देखते हैं, एक्सटर्नल में नहीं देखते. ठीक है? तो ये आपके साइंस हैं ऑफ राइट हार्ट फेलियर. राइट हार्ट फेलियर में साइनोसिस बिल्कुल नहीं होता है. Pure right heart failure, you would have absolutely no cyanosis at all. ठीक है? You would have raised JVP and you would have peripheral edema. Now let's come up to left heart failure. Left heart failure है तो venous congestion कहाँ होगी? आपके lungs में होगी. ठीक है? And the congestion in the lungs again would cause edema, but instead of peripheral edema, it will cause pulmonary edema. ठीक है? If there is fluid in the lungs, there would be less oxygenation, and patient would have shortness of breath. ठीक है? Now, if the pulmonary edema is quite severe, you can also have central cyanosis. ठीक है? But central cyanosis is more a sign of congenital heart disease rather than just plain left ventricular failure. ठीक है? तो आप जब लेफ्ट हार्ट फेलियर है, उसका जो सिम्टम है, probably the only dominant system would be shortness of breath. ठीक है? Other auxiliary symptoms along with shortness of breath, weakness, tiredness, fatigue, etc. जो भी less oxygenation के साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको left ventricular उसमें मिलेंगी. तो congestive heart failure as a whole, symptoms are shortness of breath, signs are peripheral edema, raised JVP. On auscultation of the lungs, you'll find crackles. You would find fine crepitations. ठीक है? Further symptoms में ये होगा कि the patient, when he lies or she lies flat, there would be shortness of breath, increased shortness of breath. This is called orthropnea. There would be increased shortness of breath during sleep, which is called paroxysmal nocturnal dyspnea. ठीक है?
अच्छा, अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की भी क्वांटिफिकेशन होती है. न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशंस हैं ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. किसी को पता है ये क्या होती हैं बच्चों? Anyone? देखिए, as the slide tells you, there are 4 classes of NYHA. ठीक है? NYHA class 1 is shortness of breath on maximal exertion. ठीक? Like running, like playing football, etc. NYHA class 2 shortness of breath means there is shortness of breath on walking more than 1 block or climbing more than 1 flight of stairs. ठीक है? NYHA class 3 shortness of breath is walking less than 1 block or climbing less than 1 flight of stairs. NYHA class 4 shortness of breath means shortness of breath on minimal exertion, like changing clothes, like taking a shower, etc. All clear so far, bachcho? Any questions? No, sir. Okay. अच्छा जी, आपने वो एको में तो देख लिया कि कैसे सिवेरिटी, क्लिनिकली असेस कैसे करते हैं सिवेरिटी. ठीक है? बेसिकली 2 क्लिनिकल सिनारियोज हैं हमारे. ठीक है? कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, एक है डीकॉम्पनसेटेड हार्ट. Does anybody know the difference between these two? जल्दी से बताएं. What do you understand by the terms compensated and decompensated? सर एक के अंदर हार्ट ने अपने लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है जिसके जरिए वो अपना फंक्शन किसी तरह परफॉर्म कर पा रहा है, बट उसके ऑब्वियसली कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं कंपनसेटेड में. और डीकंपनसेटेड में कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो बॉडी जो है कॉन्स्टेंटली अंडर स्ट्रेस है और नहीं पंप कर पा रहा ब्लड. सर अगर ब्लॉक्ड आर्टरी है तो उसने कोई नया रास्ता ढूंढ लिया है, सो नया नेचुरल बाईपास वगैरह बन गया है, सो दैट्स कंपनसेटेड हार्ट फेलियर आई गेस. ठीक है, दोनों मतलब well tried giving the right answer, लेकिन this is not exactly the right answer. देखिए, let's go back to our definition of heart failure. The inability of the heart to keep up with the metabolic demands of the body. ठीक है? Compensated heart failure का मतलब है कि at rest or on minimal exertion, the heart is able to keep up with the metabolic demands of the body. ठीक है? The ejection fraction may be low, the cardiac output may be low, but it is enough to supply the metabolic demands of the body at rest or on minimal exertion. ठीक है? And this has happened maybe due to adaptation of the body itself, जैसे आपने भी बताया था, और more commonly due to drugs. आपने प्रीलोड कम कर दिया, आपने वॉल्यूम कम कर दी इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट की. Decompensated heart failure means that even at rest, the heart is unable to provide for the metabolic demands of the body. Even at rest, the patient is not euvolemic. The patient is hypervolemic. Even at rest, the patient has pleural edema, pulmonary edema, hypoxia. This is what decompensated heart failure means. In compensated heart failure, the patient at rest would have no signs, would have no symptoms, but at rest. So that is the basic difference between compensated and decompensated heart failure. अब जो decompensated heart failure को हम कहते हैं, patient is euvolemic. Patient has the normal volume in the vascular compartment. Whereas in decompensated, we say the patient has higher volume. Okay. Any questions so far before we go on to the next slide? No, sir. बच्चों, कोई भी कोई आपको डांटेगा नहीं, कोई पेनलाइज नहीं होगा. आप अगर समझ आ गया है तो ठीक है, we move
Otherwise, ask me any question and I can try and explain it to you better. बताएं. Sir, compensated heart failure को again explain कर दें. देखें, एक नॉर्मल आदमी है जिसका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, वो बैठा हुआ है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के, उसको कोई एडीमा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है. उसके साथ ही एक बैठा हुआ है बंदा जिसको कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर है, वो भी देखने में बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे एक नॉर्मल आदमी है, ठीक. अब ये दोनों उठ के चलना शुरू हो जाते हैं तेज. जो नॉर्मल जिसका हार्ट है, जो नॉर्मल है, वो चलता जाएगा, लेकिन जिसको कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर है वो 3, 4, 5 कदम चल के या 10 कदम चल के उसका सांस फूल जाएगा बहुत ज़्यादा. उसकी वजह क्या है कि कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में जो उसकी मेटाबॉलिक डिमांड्स हैं पेशेंट की, वो एट रेस्ट मीट हो रही हैं. उसको कोई सिम्टम्स नहीं है एट रेस्ट, उसको कोई साइन नहीं हार्ट फेलियर का. लेकिन जब उसकी मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ती है, थोड़ी सी भी बढ़ती है, तो कार्डिक रिजर्व नहीं होता इतना कि वो मेटाबॉलिक डिमांड्स को मीट कर सके, तो वो कार्डिक फेलियर में चला जाता है, ठीक है. कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर का मतलब है कि देयर इज नो हार्ट फेलियर एट रेस्ट, नो साइंस और सिम्टम्स, बट जरा सी मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ती है, पेशेंट गोज इनटू हार्ट फेलियर. दिस इज कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर. डीकॉम्पनसेटेड मींस कि मेटाबॉलिक डिमांड्स एट रेस्ट भी नहीं हो रही उसकी पूरी, आपको उसको ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, आपको मुख्तलिफ चीज़ें करनी पड़ रही हैं, ठीक है. Yes, sir. ओके. डीकॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर जो है, ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो इमरजेंसी में हार्ट फेलियर के साथ, जो कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर वाले हैं, वो ओपीडी में आप देखते हैं, आप उनको इवैल्यूएट करते हैं. डीकॉम्पनसेटेड वाले जो हैं वो आते हैं, दे प्रेजेंट विद पल्मोनरी एडीमा, दे प्रेजेंट विद हाइपोक्सिया. उनकी इनिशियल ट्रीटमेंट जो होती है, सबसे पहली आपने उनको इंट्रावीनस लेसिक्स देनी होती है. यू हैव टू डिक्रीज देयर वॉल्यूम. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू in someone with decompensated heart failure is to decrease their volume. और आप उनकी जो वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, उसके लिए एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू डिक्रीज द वॉल्यूम. कोई बच्चा बताएगा क्या इम्पोर्टेंट चीज़ वाइटल्स में होनी चाहिए, तब आप उनकी वॉल्यूम डिक्रीज कर सकेंगे? कोई भी तुक्का लगाएं, कोई भी गेस करें. Oxygen saturation. हाँ, वो तो कम होगी ना, तभी तो डीकॉम्पनसेटेड है. Blood pressure. वेरी गुड. पेशेंट शुड बी नॉर्मोटेंसिव बिफोर यू कैन डिक्रीज द वॉल्यूम. अगर हाइपोटेंसिव हैं और आपने वॉल्यूम डिक्रीज की तो वो फर्दर हाइपोटेंसिव हो जाएंगे ना, ठीक है. तो Yes, अगर हाइपोटेंसिव है और डीकॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर है, तो इस क्लिनिकल सिचुएशन को क्या कहते हैं? बताएं. टीवी Shock? फिल्म में, हाँ, यस. This is the clinical scenario of shock when there is decompensated heart failure and the patient is hypotensive. This means the patient is in shock. ठीक. शॉक में है कोई पेशेंट, तो क्या करना है आपने? How can you try to save that person's life? आपको पता है, I'm sure, even though you're in third year, I know you know the answer. देखो, मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ. आपने ब्लड प्रेशर बढ़ाना है पेशेंट का और ऑक्सीजनेशन बढ़ानी है फौरी सर, तौर पर. अगर हाइपोवोल्यूमिक शॉक है तो फिर प्लाज्मा चढ़ाएंगे, या फिर अगर जैसे बेटा हाइपोवोलीमिक नहीं है ना, डीकॉम्पनसेटेड आपको बता रहा हूँ. हाइपरवोलीमिया है और हाइपोटेंशन है. So will we give phenylephrine? ओके, तो आप phenylephrine is one of the positive inotropes. Same as dopamine, adrenaline and noradrenaline. ठीक है, तो आप उनको
Positive inotropes देंगे, you'll increase the blood pressure and you'll give it parenterally. One thing, oxygenation को कैसे बेहतर करेंगे? शॉक में है ना पेशेंट, आईसीयू में कैसे होती है मरीज? Ventilator. Very good. You'll intubate the patient, you put the patient on the ventilator. ठीक है? Invasive ventilation भी होती है, नॉन इन्वेसिव भी होती है, वो भी आप पढ़ोगे आगे जाके. बेसिकली आपने ये दो चीजें करनी है, आपने वेंटिलेट करना है ताकि ऑक्सीजनेशन बेहतर हो, और आपने ब्लड प्रेशर बढ़ाना है ताकि आप वॉल्यूम कम कर सको. ठीक है? एक चीज मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ, इस तरह का पेशेंट हो, आप उसका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा लो अच्छी तरह, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग फ्यूसमाइड देयर इज समथिंग कॉल्ड व्हाट, अल्ट्राफिल्ट्रेशन. जैसे डायलिसिस करते हैं ना, इस तरह अल्ट्राफिल्ट्रेशन होती है, जस्ट टेक आउट द वॉल्यूम. इट इज सुपीरियर टू गिविंग जस्ट फ्यूसमाइड. ठीक है, याद रखना ये. Yes, sir. Then you also give ACE inhibitors to decrease the preload and the afterload. But all of this is possible if the patient is normotensive. Patient is hypertensive, in shock, all of these things आप नहीं कर सकते हो. You have to increase the pressure and you have to increase the oxygenation. Any questions so far before we go on to the next slide? जो भी पूछने आप पूछ सकते हो बेटा. No questions? No, sir. Okay. अच्छा जी, ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर. बेसिकली आपने डीकॉम्पनसेटेड को कॉम्पनसेटेड बनाना है. ठीक है, ताकि मरीज घर जा सके, अपने नॉर्मल काम कर सके जो घर में वो उसने करने. जिसको भी हार्ट फेलियर है वो मैराथन नहीं भाग सकता, वो बहुत एक्टिव काम नहीं कर सकता, लेकिन आपने उसको इतना बना देना है कि वो अपने काम कर सके रोज़मर्रा के, या उससे भी ज़्यादा ऑफिस जा सके, सेमी एक्टिव लाइफ गुजार सके. ठीक है, तो कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर का मतलब है कि पेशेंट अब आपका है आउट पेशेंट, इज़ नॉट एन इन पेशेंट. उसकी आपने करनी क्रॉनिक ट्रीटमेंट. तो जो डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स हैं, अगर पेशेंट है डीकॉम्पनसेटेड, आपने उसको कॉम्पनसेटेड बनाना है. ठीक है, फिर आपने उस पेशेंट को डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स देने हैं. डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स का मतलब है कि वो सिर्फ सिम्टम्स को बेहतर नहीं करते, वो प्रोग्नोसिस को बेहतर करते हैं. अगर आप ये ड्रग्स ना दें किसी को, तो वो अगर मोर्टेलिटी उसकी 1 साल की है, तो ये ड्रग्स देने से हो सकता है 10 साल वो जिंदा रहे. ठीक है, दिस इज व्हाट डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स मीन. कैन anyone tell me what are the disease modifying drugs in heart failure? Blood thinners, aspirin, antiplatelet drugs, beta blockers. अगर ischemic heart disease है तो ठीक है, antiplatelets. Otherwise heart failure per se में antiplatelets. Beta blockers वगैरह, या ACE inhibitors. Okay, beta blocker कौन से beta blocker? Metoprolol. कौन सी? Metoprolol. Metoprolol. या फिर Metoprolol. Yes. उसके अलावा Atenolol. Levetiracetam. Carvedilol. ठीक है, या ACE bisoprolol. inhibitors भी दे सकते हैं. बिल्कुल, लेकिन आप पहले अभी बीटा ब्लॉकर पे रुको ना. मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, कार्वेडिलॉल एंड नेबिवलॉल. इसके अलावा जितने हैं, प्रोपेनोलॉल होगी, एटेनोलॉल होगी, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड. वो आप नहीं देते हो हार्ट फेलियर में. सिर्फ ये 4 हैं जो दे सकते हैं. ठीक है, रिपीट करें कौन से 4 हैं? Metoprolol, Levetiracetam, नेबिवलॉल नहीं, मेटोप्रोलॉल, कार्वेडिलॉल, बिसोप्रोलॉल एंड नेबिवलॉल. bisoprolol. ठीक है, अच्छा. सही है. ACE इनहिबिटर्स भी आप देते हैं, भी देते हैं. ठीक है, एक नया ड्रग है साइक्लोबिट्रल, which is a combination of ARB and neprilysin inhibitor.
It is supposed to be superior to just giving ACE inhibitors alone or ARB alone. ठीक है? Sacubitril, आप लोग गूगल करके देखना, it is the latest drug and it is extremely good. तो चलें, बीटा ब्लॉकर हो गए, ACE, ARB या sacubitril हो गया, और डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग बताएं, एक और बताएं. It is spironolactone. ठीक है? Furosemide is not disease modifying. आप decompensated में देते हैं to make the patient compensated again, but it is not disease modifying. Spironolactone is, because cardiac failure causes secondary hyperaldosteronism. Spironolactone is an aldosterone antagonist. ठीक है? So this is a disease modifying agent as well. अगर हार्ट फेलियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से है, जो सबसे लीडिंग कॉज है हार्ट फेलियर का, तो एंटीप्लेटलेट भी आपके डिजीज मॉडिफाइंग है और स्टैटिन भी है. ठीक है? एनी क्वेश्चंस बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? बच्चों सो गए हो बच्चों? No, sir. कोई सवाल पूछना है? Not so far. अच्छा जी, दवाइयाँ तो हम देते हैं क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं, लेकिन देयर इज अ बिग रोल ऑफ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट. वो क्या है? You modify the risk factors for coronary artery disease. You stop smoking, you stop eating तंबाकू वाला पान, you take regular exercise. Even with heart failure, compensated exercise is always good. What I tell my patients, even people who have an ejection fraction of 20, to take as much exercise as they can. Salt restriction. Sometimes never ask anyone to go on a salt-free diet. It is counterproductive. You restrict salt. You don't make salt absent from anyone's diet. Okay? The sodium is important for a normal functioning body. So you can restrict the salt from, let's say, 10% to as much as 70%. Okay? Then there is something called cardiac rehabilitation. We exercise people, we increase their exercise capacity scientifically in a cardiac rehab center. Okay? This is shown to be as effective as drugs or as other things. Okay? So cardiac rehabilitation is also very important. Any questions before we go on to the next slide, bachcho? Hello? No, sir. अच्छा, अब चूंकि हम एडवांस्ड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में हैं, तो वी हैव सम डिवाइसेस फॉर हार्ट फेलियर. सबसे इम्पोर्टेंट इनमें से है कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी. ठीक है? समझने की आप बेशक कोशिश ना करो. आपको मैं ये बता देता हूँ कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल शुड undergo systole in a synchronized manner. ठीक है? अगर एक की सिस्टली पहले हो रही है, एक की बाद में हो रही है, तो इससे इजेक्शन फ्रैक्शन फर्दर कम हो जाती है. ठीक है? ऐसे मरीजों में हम कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी करते हैं ताकि आरवी एंड एलवी सिंक्रोनाइज हो जाएं दोबारा. ठीक है? इसके अलावा किसी को हार्ट फेलियर है, दे वेटिंग फॉर कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन, तो उनको एज ए ब्रिज ऑन थेरेपी हम कार्डियक असिस्ट डिवाइस लगा देते हैं. ठीक है? आप समझो जैसे बैसाखी होती है, कुछ से चला नहीं जा रहा, आपने बैसाखी दे दी, वो उससे चल रहा है जब तक उसकी टांग नहीं लग जाती, तो वो होती हैं. फिर यंग पेशेंट्स में जिन्होंने अभी काफ़ी साल आगे देखने हैं, उनमें हम कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन का भी सोचते हैं. कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन पाकिस्तान में नहीं होती. कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन हमारे पड़ोसी मुल्क में होती है, इंडिया या फिर सिंगापुर में होती है करीब में,
और दुनिया भर में और बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ होती है। इसके लिए अमूमन एज शुड बी बिलो 35, कोई मेटाबॉलिक बीमारी ना हो, और इजेक्शन फ्रैक्शन यूजुअली 25 से कम हो, 20 से कम हो, और आप you have to find a suitably matched donor. Even after cardiac transplantation, the 5-year survival is only 50%. Latest जो हैं stats, they say that the 5-year survival is 50 to 70%. It's not 100%. And after transplantation, the patient still has to take immunomodulating agents. Prognosis, बच्चों, जब मैं आप लोगों की स्टेज में था बहुत पहले 1720 ईस्वी में, तो उस वक्त जो प्रोग्नोसिस था, हार्ट फेलियर किसी को हो जाता था, the prognosis was a survival of only 50% after 5 years. But with all these medications and with all these new treatments, the prognosis has improved considerably. I have so many patients who first presented with heart failure 15 years ago, they're still surviving even with an ejection fraction of 20. So these are almost magical drugs that we have. Okay? Cardiac failure की mortality जो है, it is comparable to that of cancer. It is that toxic a disease, or that क्या कहना चाहिए, इतनी बुरी बीमारी है, ठीक है? So any questions before we go on to the next slide? Sir, does cardiac failure present with arrhythmias too? And if it Beta? does, what? Arrhythmia क्या? Sir, does cardiac failure present with arrhythmias too? And if it does, in what condition does it do? Cardiac failure is associated with arrhythmias. Sometimes a patient, you may identify someone with cardiac failure because he came in with an arrhythmia. It's not accurate to say that cardiac failure would present with arrhythmia. It's associated with arrhythmias, yes. Different kinds of arrhythmias, atrial fibrillation, SVT, ventricular tachycardia, VFib arrest. अब जब भी कोई arrhythmia आप देखते हैं पहली दफ़ा, तो आप electrolytes करते हैं, आप thyroid functions करते हैं. You have to exclude ischemia as the cause. किसी को recurrent arrhythmia हो रहा है, ventricular हो रहा है, तो आप ICD लगा देते हैं, which is also a device. It's implantable cardiac defibrillator. जैसे आप ऊपर से शॉक देते हैं, वो यहाँ पे कॉलर बोन के नीचे एक डिवाइस लग जाती है,